Hello, second class. How are you all? I hope you are fine. Let's start today's class. In our previous class, we have learnt about the common noun and proper noun. Common naming words, proper naming words. Okay. Now today we are going to start our block 7. Pronouns, friends. Now students, in this today we will talk about the character of Pranav from the story. This is a story Pranav's friends. So today we are going to talk about Pranav. We will think of words that describe him. Okay? So student, this is a word verb. We talk about Pranav and we will describe the Pranav. Now student, tell me what kind of boy is Pranav? So Pranav is a nice boy. So your describing word is nice. नाइस है वो डिस्क्राइब करना है ना प्रणव को कैसा बॉय था वो. प्रणव वॉज नाइस. और कैसे था वो. नाउ लुक एट दिस. ट्रीज एंड बुशेस आर प्रणव्स फ्रेंड्स और नॉट. यस, ऑल द ट्रीज आर माई फ्रेंड सेड प्रणव. सो ही इज फ्रेंडली. कैसा था वो. फ्रेंडली था. सो वी राइट डाउन हियर फ्रेंडली. Friendly. And he is kind boy. He is kind also. And she is good. He is a good boy. Good भी था ना वो. And he is loving. वो love करता था garden से और trees से. So he is loving and he is sweet. So student, these are the words that describe Pranav. So now students tell me which character did we talk about here. Now student, tell me. We talked about Pranav. We talked about Pranav here. Which character did we talk about? Pranav. We talked about Pranav. Now student, tell me what words did we use to describe him? So these are the words nice, sweet, loving, good, kind, friendly. So these are the words that we described Pranav. Described Pranav. Pranav is kind. Pranav is nice. Pranav is sweet. Pranav is loving. Pranav is good. Pranav is friendly. So these are the describing words that describe Pranav. Now student, tell me, how can a word verb help us to describe a character? कैसे describe करती है? So we can use a word verb. This is a word verb. We can use a word verb to bring together different words that describe a character. वर्ड वर्ब के थ्रू हम डिफरेंट वर्ड्स को एक साथ राइट कर सकते हैं ना वर्ड वर्ब में. अब देखो यहाँ पे नाइस भी राइट कर दिया हमने, स्वीट. तो एक में ही सारे के सारे वर्ड राइट कर दिए ना. सो दिस वर्ड वर्ब और दिस word verb to bring together different words that describe a character. इस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए जो डिफरेंट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स थे वो हमने एक ही प्लेस पे राइट कर लिए है ना. सो स्टूडेंट, टेल मी, हाउ कैन अ वर्ड वर्ब हेल्प अस टू मेक सेंटेंसेस. नाउ स्टूडेंट, टेल मी, हाउ कैन दिस वर्ड वर्ब और वर्ड वर्ब हेल्प अस टू मेक सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, word verbs help us to think of words to use in a sentences. easily think कर सकते हैं word verb में जो words हैं उससे sentences है ना. we can use words from the word verb with other words to form a sentence. all sentence has a naming words and doing words. सपोज मैम ने राइट किया प्रणव
is a good boy. Pranav is a good boy. Pranav is good. राइट करा मैंने. So it has a naming word. All the sentences have a naming word. So this is a naming word. और noun भी बोलते हैं ना naming word को. तो this is naming word और noun. And all sentences have a describing word or a doing word. All sentences have a doing word. So क्या है? Pranav is a good boy. कैसा boy है वो? Good boy है. Here good is a describing word. Describing word है ना. So many sentences also have a describing word. तो यहाँ पे describing word है. अगर मैम लिखते हैं Pranav is playing. Pranav is playing. Here Pranav is a naming word and play is a doing word. मैम राइट करते Pranav is a good player. तो कैसा प्लेयर है वो? गुड. तो यहाँ पे गुड क्या हो जाता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाता है ना. सो मैनी सेंटेंसेज हैव also have a describing word. So there is a naming word and there is a describing word. We can use the words am, is and are to connect a describing word. हम कैसे word use करेंगे? is, am भी use कर सकते हो आप, are भी use कर सकते हो. sentences को connect करने के लिए naming. So is, am and are to connect describing words to the naming words that they describe. अब यहाँ पे आपका ये था सेंटेंस प्रणव इज़ अ गुड बॉय. तो हमने इज़ है यहाँ पे क्या है? इज़ को हमने किसके साथ कनेक्ट किया? जहाँ पे इज़ वर्ड को नेमिंग वर्ड यहाँ पे प्रणव है और डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे गुड है. तो हमने नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइबिंग वर्ड से के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया इज़. सो दीज आर द words that connect describing words to the naming words is, am and are. Okay, so student, this is your topic, describing words with the help of word web. So your topic is word web and these are the describing words: nice, sweet, loving, good, kind and friendly. Now student, look at this practice question 3 and this is the block 7 describing words. This is practice question 3. Underline the describing words. यहाँ पे कुछ words दिए हुए हैं, आपको describing word को underline करना है. Here is the word tree. Tree describing word है? No. Tree name है ना, तो tree is naming big tree. तो this is describing word big. Bush is naming word. Tall describing word. Green is also describing word. Mango name है ना, तो this is naming word. Small क्या है? describing word. प्रणव किसी का name है, so this is naming word. So student, you have to underline the describing word. This is your question 3. So you have to complete this question and write down your answer in. यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन अपनी बुक में ही करना है. ओके.